بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students, welcome to the new lecture of class 5th English. Students, take out page number 16, the last page of this chapter, the greatest reformer. So let's start reading of this last page. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived in the city of Medina for about 10 years. By the time of his departure from this world in 632 AD, Islam was established as the religion of the Arabia. Muslims had become a major force to reckon within the area. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought many battles against the infidels. Soon, Islam spread the whole Arabia. At the time of the conquest of Mecca, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam forgave all his enemies. He sallallahu alaihi wasallam built up the Islamic government in Medina. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam possessed good manners and affection for all. He sallallahu alaihi wasallam appreciated emancipation of slaves. During his last Hajj, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed the Muslims that neither white is superior to a black, nor an Arab to a non-Arab. Superiority depends upon good deeds only. Before the arrival of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Arabs were cruel and uncivilized people. After his arrival, they become a civilized nation and role model for other Muslims. Women got equal rights like men in the society. Women also became eligible to have a share in the property of both their parents and husbands. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away when he was 63. His sacred tomb is in Medina. He showed the right path to the people of the whole world. He made his followers honest, pious, kind, and truthful. Students, there are some difficult words. Try to learn their meanings. For example, religion. Religion means mazhab. Departure means rukhsati. Recon means shumar karna या गिनना. Fight, यहाँ पर fought है. So fought is the second form of fight. Fought. So ये लड़ाई को कहते हैं. And battle, जंग को कहते हैं. Battle means जंग. Infidels, kafir. Conquest, fatah. Enemy, dushman. Belt is the second form of belt. Belt means, what is the meaning of belt? Ta'mir karna, qaim karna. Government, hukumat. Affection means muhabbat, shafqat. Appreciated means daad dena. Emancipation means azadi ya rahai. Superior means buland, upar, bartar. Arrival means amad. Sacred means muqaddas, park. Tomb means qabr. Pious means muttaqi ya deendar. Students, now let's start translation of this page.
The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived in the city of Medina for about 10 years. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने मदीने के शहर में तकरीबन 10 साल गुजारे. By the time of his departure from this world in 632 AD, Islam was established as the religion of the Arabia. Muslims had become a major force to reckon within the area. 632 ईस्वी वसल्लम की इस दुनिया से विसार के वक्त तक इस्लाम सरजमीन अरब का मुस्तहकम मजहब बन चुका था और इर्द गिर्द के इलाकों में फैल चुका था और मुसलमान वहाँ पर एक बड़ी कुव्वत बन चुके थे. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought many battles against the infidels. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने काफिरों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी. Infidels means काफिरों के खिलाफ, against the infidels काफिरों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी. Soon Islam spread in the whole Arabia. बहुत जल्द इस्लाम पूरे अरब में फैल गया, पूरे अरब पर गालिब आ गया, पूरे अरब में फैल गया. Spread in. At the time of the conquest of Makkah, फतह मक्का के वक्त, तो मक्का के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgave all his enemy. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ किया. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम built up the Islamic government and मदीना और मदीना में इस्लामी हुकूमत कायम की. The Holy Prophet हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम possessed good manners and affection for all. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे और सब पर मेहरबान थे, सबके साथ मोहब्बत रखते थे. He appreciated emancipation of slaves. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को के आज़ाद करने को पसंद फरमाया. During his last Hajj, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed the Muslim that neither white is superior to a black, nor an Arab to a non-Arab. Superiority depends upon good deeds only. अपने आखिरी हज के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से खिताब करते हुए फरमाया कि गोरे को काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं और अरबी को अजमी पर और ना अजमी को अरबी पर. किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं. बर्तरी कर हासिल है तो बर्तरी का इन्हिसार जो है, बर्तरी का इन्हिसार किस चीज़ पर है? सुपीरियरिटी डिपेंड्स अपॉन गुड डीड्स ओनली. बर्तरी का इन्हिसार अच्छे अमाल पर है, अच्छे अखलाक पर है. Before the arrival of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Arabs were cruel and uncivilized people. After his arrival, they became a civilized nation and a role model for other Muslims. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के लोग जालिम और गैर मुहज़्ज़ब थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वो मुहज़्ज़ब कौम बने और दूसरों के लिए एक मिसाली नमूना बन गए. A role model for other Muslims. Women got equal rights like men in the society. Women also became eligible to have a share in the property of both their parents and husbands. माशरे में औरतों को मर्दों के बराबर के हकूक़ हासिल हुए और औरतों को इनके वालिदैन और शोहर के जायदाद में से हिस्से का अहल करार दिया गया. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away when he was 63. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई. जब वो 63 साल के हुए तो उन्होंने वफ़ात पाई. His sacred tomb is in Medina. उनका रोज़ा कहाँ पर है? उनका रोज़ा मदीना में है. He showed the right path to the people of the whole world. He made his followers honest, pious, kind and truthful. वसल्लम ने पूरी दुनिया के लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, राइट पाथ, सीधा रास्ता दिखाया. वसल्लम ने अपने मानने वालों को ईमानदार, मुत्तकी, रहमदिल और रास्तगो बनाया. So students, this lesson was all about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you want to be a successful person, so follow Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जो बातें उन्होंने की है, जो काम उन्होंने किए, हमें उनको करना चाहिए. अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें वो चाहिए कि वो काम करें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं. जो काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने से मना किया है, हमें उसे नहीं करना चाहिए.
और ज़रूरी बात जो है वो आपको ये याद रखना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और पैगंबर है और उनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। दिस शुड बी आवर बिलीव, दिस शुड बी और फेयर कि उनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा और ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को अपनाएं, उनके ज़िंदगी के जितने भी तरीक़े उनको अपनाएं, तो हम इंशाल्लाह ज़िंदगी और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। सो होमवर्क फॉर यू इज़, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो हमने जो आज जो सबक पढ़ी उन इसमें आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उनके मीनिंग लिखने हैं। कम से कम 10 वर्ड्स या 12-15 वर्ड्स लिख सकते हैं आप। वर्ड लिखे और फिर मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू सेंड करें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.